मैम ये देखिए यार अभी थोड़ा कैमरा हो गया मैम यार मैम वेट नीचे मैम रानी है मैं 1 मिनट में निकल चलो क्या जा 1 मिनट जाइए हाँ प्लीज ओके ओके 3 मिनट मैं शूट तो भी करूँ रुको ना मैडम आ रही है थैंक यू मैम ये राइट मैम राइट मैम ये मैम ये राइट सब बोल रहे मैम वेट मैम वेट अरुण मैम वेट वेट मैम जो बाहर आइए पहले बस मेरे को अंदर भी जाना है तीनों कोई नहीं आ रहे ना अरे तो सुनो ना तुम क्या आप लोग के फील्ड को आगे ना क्यों नहीं यार क्यों ना मैम यार सेंटर कौन वेट सर ये स्ट्रेट ये स्ट्रेट अच्छी आवाज दे मुझे बोल के नहीं देता सर ये तो फायदा नहीं है थैंक यू is going to look forward to these kind of initiatives. So it's fun. It's a great learning for everybody. Whether you are here for 10 years, 20 years, or you are just a year old. Thank you. So today is the second edition of Making. Yeah. Many young talents are going to showcase their talent. What do you like to say about it? I always enjoy this. Last year I was there to watch, and it's a great initiative for all directors, actors, any kind of technician who are part of this field. So it's fun. So whenever we take a name of a theatre, we will memorize Purism. Recently we have lost our What do you like to say? It's a great loss for our industry, great talent, and but he has given us so much that we will keep on learning from him. He's alive in us. So what are upcoming project? You are We'll only talk about Khidkiyan hai, nothing more. I'm working on the script. We'll get back soon. Thank you. Can we have a video party? Hello. Hi. मियाँ बहुत ही अच्छा प्ले था और मैं जब से मुंबई में आई हूँ मैंने प्ले नहीं देखे, मैंने एक ही प्ले देखा था और ये मेरा दूसरा प्ले है मुंबई में। ओह सॉरी। और बहुत ही बढ़िया प्ले था, बहुत ही फनी और मुझे मन करा ऐसे कि मैं भी जाके स्टेज पे कुछ करूँ, तो बहुत अच्छा लगा। नो, I have not signed anything as of now, but hopefully I'll sign something very soon. True. Yeah. True. I think stage performance से काफ़ी confidence बढ़ता है as an actor. I used to do stage, मैं डांस करती थी स्टेज पर, एक्टिंग नहीं करी है, बट एक ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का और काफ़ी हेल्प मिलता है क्योंकि सेट पे भी काफ़ी सारे लोग होते, सिर्फ एक कैमरा नहीं होता, तो आई थिंक काफ़ी हेल्प करता है एक एक्टर को स्टेज पे परफॉर्म करके देखने के लिए। बट ये जो मैंने अभी प्ले देखा उसमें सब बहुत ही अच्छे थे, सबकी एक्टिंग, मेरा तो दिमाग ही यानी बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एक कॉन्फिडेंस ही नहीं, एक सलीका पता चलता है, आपको पता चलता है कि आप मतलब
जैसे हमारे लिए एक कैमरा इज द ऑडियंस, फॉर देम वी आर, सो इट एक्चुअली इट हेल्प्स अ लॉट एज एन एक्टर। और वो क्या हो तो यानी कैमरा कुछ बोलता नहीं, आप एक्ट कर रहे हो तो आप जज नहीं कर पाते, पर लोग तो यानी चिल्ला रहे हैं, हूट कर रहे हैं, तो मज़ा आता है। कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं है, घर जाने का बहुत मन है, तो आई होप मुझे घर जाने का थोड़ा टाइम मिले। Can you tell us about your thoughts on this festival? It's really good. I feel like that I'm theatre or for the films or the actors. It feels really good. And did you like the play? I loved it. Like I was literally screaming. I was even whistling. So it was really good. I really loved it. Thank you so much. आदित्य इंटीरियर मैं मुकेश के साथ आ रहा हूँ क्या बोलना है? मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ, मैं लास्ट ईयर नहीं आ पाया था और मुझे पता है कि यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं और मेरे में टैलेंट की थोड़ी कमी है। सो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आई जस्ट कम हियर टू एंजॉय दिस इवनिंग एंड I want to congratulate Mukesh Habda and the entire team and everyone who is associated with this beautiful event. And I think it's about time we needed something like this in Mumbai. And I didn't have this when I was growing up, when I was younger. So just want to congratulate everybody. Thank you for having me here. Lots of love. So इससे पहले तारिक शादी and now Sarkar Ji and everyone is praising your acting. What do you have to say about it? All I can say right now is that the trailer has come. परसों ट्रेलर रिलीज हुआ है एंड हिंदुस्तान की जनता से, इंडस्ट्री से, दोस्तों से, हर जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है एंड आई जस्ट होप यार दैट इट जस्ट गेट्स बेटर फ्रॉम हियर एंड द मूवी आ रही है 7 अप्रैल को, सो प्लीज जाके देखिए। थैंक यू मैन भाई। ये निकला माता का रूप, त्रिशूल लगेगा पहले। Right? Men get scared. Men get scared. Nobody, nothing. No. Hata नहीं. Next, you like it or no. What did you say? हमारी हिंदी भी हो जाती है कि बिना से सारी चीजें क्यों बुलाते उसको? And after 20 minutes, she goes, "Oh, that idiot! You heard it the first time." One inside. How do you want time for your? You just have time for it. What about it? Music time.
Hi, hello. Can you tell us about your thoughts on this festival? Well, last time I missed Khidkiya, the first season, the first year of it, and I really regretted it because I was not here. But I'm glad that I can attend this time, and I'm really looking forward to it. I think it's not only just a theatre festival; it's more like a carnival of different forms of arts. Which it's not only entertaining, but it's lovely to just watch how talented people are here. There's so many plays, there are poetry recitations, there are comedians, there are stand-up comedians, there I think a lot of improv acts, there are so many musical performances. So I think it's a great effort that Mukesh has and the entire team has put together, and I'm so glad that we have something like this happening in Mumbai every year. It should continue. Thank you. How important is it for the to get such kind of talent? I think it's lovely because there are so many people who come and watch you here. Also, I think as an experience, I feel the more you keep doing, the more you face audience. I think the better you sort of get. I didn't get a chance to do theatre. I think I never took that route, or I never realized that I could do it. But I felt that my audition dete I felt that I was getting better. So I think it's a great platform because you can showcase your talent, you can show what you have. It's such a great platform. There's normal Janta watching you. There are also a lot of directors and all who come and watch this festival. So it's an amazing opportunity. And there's Mukesh who's here, who's making all this happen. So you never know, you might get cast.